अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम मिस। वालेकुम अस्सलाम बेटा। अच्छा जी, स्टार्ट कर देते हैं। आज शुरू करना था हमें बैलेंसिंग इक्वेशन। अच्छा बेटा, कोई क्वेरी है? पढ़ लिया था आपने? जितना अब तक पढ़ा है हमने उसको रिव्यू कर लिया था। यस। उसमें कोई चीज़ ऐसी जो समझ ना आई हो? नहीं नहीं। ठीक है। तो फॉर्मूला मेकिंग जिस तरह आपने कर ली थी, तो अब उन्हीं फॉर्मूला मेकिंग को यूज़ करते हुए, यानी लाजमी बात है, यू नो हाउ टू मेक द फॉर्मूला नाउ। तो अब उन्हीं फॉर्मूलाज को यूज़ करते हुए वी आर गोइंग टू मेक अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ठीक है, कैसे हम एक इक्वेशन बैलेंसिंग करेंगे? पहले तो इक्वेशन बनाने आनी चाहिए, उसके बाद बैलेंसिंग। तो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ फ्यू एग्जांपल्स। सारी आयनिक इक्वेशंस की सारी थ्योरी है, ये इतनी ज़रूरी नहीं है। ठीक है, अब ऑनवर्ड्स जितना भी मैं पढ़ाऊंगी ना, यानी वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम पेज नंबर 62 टिल 81, it is all related to numericals, balancing equation, making formula, making equation. So the theory is not very important obviously. आपको यहाँ पे सिर्फ प्रैक्टिस करनी है। थ्योरी यहाँ पे मैं आपको प्रोवाइड इसलिए कर रही हूँ ताकि अगर कोई आप स्टेप मिस कर जाती हो, भूल जाती हो, तो दैट यू हैव द होल थ्योरी टू रिकॉल इट। अदरवाइज आपको सिर्फ इसमें न्यूमेरिकल्स और इक्वेशंस करनी होगी। तो वी विल स्टार्ट विद बैलेंसिंग इक्वेशन। अच्छा जी, लेट्स स्टार्ट विद अ सिंपल वन। You know what neutralization reaction is? Neutralization. नो। Okay. When acids react with bases, what are the example of acids? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। Yes. And other than hydrochloric acid, what are the other strong acids we have? NaOH। No, it's a base. It is having OH, right? Hydroxide या OH जहाँ पे आता है, it is indicating, and AOH is sodium hydroxide, right? So OH या is indicating that this whole compound is a base. बस बेस की डेफिनेशन है कि इट इज हैविंग नेगेटिव आयन या हाइड्रोक्सिल आयन, और एसिड है ऑब्वियसली which is having positive hydrogen ion. Do you know the exact definition of acid and base? या आई थिंक आई नो इट। Hmm. Acid has a pH like less than 7 and base is like more than 7. Okay, that is the property of acid and base. We're talking about the exact definition. Actually, there are so many laws, uh, like Bronsted-Lowry theory, okay? Then we have Arrhenius theory. Then we have Lewis acid and base. So the basic definition of hydrogen of acid is in aqueous state. Aqueous means in water. These acids are going to ionize and form hydrogen ion. This is the definition of acid. Then acids in aqueous medium or in water, they are going to form hydrogen ion. When it comes to bases, again in aqueous medium, only in aqueous medium. हम aqueous medium की बात करें यानी water के अंदर. When we are going to mix acid or base with water, then they are going to ionize respectively into positive and negative ions, यानी कि हाइड्रोजन आयन रिलीज हो रहा है तो हम उसको एसिड कहेंगे। और अगर हाइड्रोक्सिल आयन, हाइड्रोक्सिल HYD, ROXYL, हाइड्रोक्सिल आयंस, ठीक है। अगर हाइड्रोक्सिल आयंस हैं तो वो ऑब्वियसली बेस है वाटर में, यानी कि एक्वस मीडियम के अंदर रिलीज कर रहा है बेस हाइड्रोक्सिल आयन, और एसिड रिलीज कर रहा है हाइड्रोजन आयन। दैट इज जस्ट द वन डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू वन थ्योरी, दैट इज आर्हेनियस थ्योरी, ठीक है। और भी बहुत सारी थ्योरीज हैं बट अभी वो हमें नहीं पढ़नी ऑब्वियसली। हम बात कर रहे हैं स्ट्रॉन्ग एसिड्स की। अब आप मैं आपसे पूछ रही हूँ कि स्ट्रॉन्ग एसिड क्या है, तो आप बोल सकती हो कि स्ट्रॉन्ग एसिड्स आर द वन विच इज हैविंग pH लोअर देन 4 और 3। जैसे समझ लो कि pH 1 2 3 मीन्स दे आर स्ट्रॉन्ग एसिड्स। और जैसे ही क्लोजर टू नियरेस्ट टू या क्लोजेस्ट टू 7 होती जाएगी वैल्यू pH की, द एसिड वुड बिकम वीकर, ठीक है। सो हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इट इज हैविंग अराउंड pH 1 पॉइंट समथिंग, ठीक है, 1.7 1.6 इस तरीके से। इसी तरह हमारे पास दूसरी एग्जांपल है स्ट्रॉन्ग एसिड की, HNO3 विच इज नाइट्रिक एसिड, NiTRIC, nitric acid. Then we have sulfuric acid.
So these are the only examples of strong acids. We have three strong acids: nitric acid, sulfuric acid, hydrochloric acid. So the reaction between acid and base is NaOH. Any compound having hydroxyl ion is called as base. बेस की भी डेफिनेशन जो है वो दो हो सकती है, ठीक है, बिकॉज देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन बेस एंड अल्कली. डू यू नो व्हाट अल्कली एंड बेस इज? AlKAli, अल्कली. Actually, I don't know. ओके, जस्ट लिसन टू मी वेरी केयरफुली. मैं थोड़ा सा इसको रिव्यू करा के फिर इक्वेशन पे आऊंगी. एसिड की डेफिनेशन मैंने आपको बताई कि एसिड्स आर द केमिकल्स व्हिच आर रिलीजिंग हाइड्रोजन आयन इन एक्वस मीडियम, राइट. जब भी हम HCl की बात करेंगे तो दिस HCl, when it is adding with H2O, this one is going to ionize into hydrogen ion and chloride ion. This is acid, right? And when we talk about base, any metal, either Na, Mg, potassium, or any of the metals which are having bond with hydroxyl ion, OH, या फिर ऑक्सीजन भी हो सकता है, ठीक है. यहाँ पे भी मैं OH रख सकती हूँ, ऑब्वियसली ब्रैकेट में 2 आएगा. वाई? बिकॉज मैग्नीशियम इज हैविंग +2 वैलेंसी. या फिर ऑक्सीजन, यानी MgOH हो या फिर MgO हो, इसको हम बेस कहेंगे, ठीक है. बेसिस क्या होती है? हाइड्रो ऑक्साइड और ऑक्साइड्स, यानी ये सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड हो या ये सोडियम ऑक्साइड हो, ये बेस कहलाएगा. लेकिन अल्कलाई क्या होता है? अल्कलाई की डेफिनेशन फिक्स है. वो क्या है कि व्हेन अल्कलीज या अल्कलाइज आर इन एक्वस मीडियम, that means H2O, they are going to ionize obviously and they will be releasing hydroxyl ion in aqueous medium. So we are so clear about acids and alkalis. These are the acids which are releasing hydrogen ion in aqueous medium, and then we have alkalis, AlKAli, alkali, and obviously this is acid. तो दो टर्म जो अल्कलाई और बेस मैंने बोली, इसको लोग काफी कंफ्यूज कर देते हैं, ठीक है. ये दोनों एक बात नहीं है, डिफरेंस है बेस और अल्कलाई में. बेस में हाइड्रो ऑक्साइड को भी कह सकती हूँ, बेस में ऑक्साइड को भी कह सकती हूँ, यानी NaOH भी बेस है और Na2O यानी सोडियम ऑक्साइड भी बेस है और सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड भी बेस है. लेकिन अल्कलाई सिर्फ ये है. क्यों? क्योंकि सिर्फ ये कैपेबल है हाइड्रोजन यानी कि वाटर में, डाईहाइड्रोजन ऑक्साइड या वाटर में क्या रिलीज करता है? ये हाइड्रोक्साइड आयन. और मैंने अल्कलाई की डेफिनेशन आपको बता दी क्या, कि ऑल द अल्कलाइज आर गोइंग टू रिलीज हाइड्रोक्सिल आयंस इन एक्वस मीडियम. So this NaOH is alkali. Sodium oxide cannot be an alkali, but both are bases. Do you now getting the difference between these two, base and alkali? Yeah. Okay. An acid, obviously acid की एक ही definition बहुत सारी भी हो सकती है, but मैं basic की बात कर रही हूँ कि they are releasing hydrogen ion in aqueous medium, only in aqueous medium. If it is not in aqueous medium, if it is in solid state में भी the crystals of acid, या अगर gaseous state में हाइड्रोजन क्लोराइड मौजूद है, गैस की फॉर्म में मौजूद है, तो obviously they won't be ionized. We are only talking about aqueous medium या solvent आपके पास मौजूद हो, water. तो वाटर के अंदर ही आयनाइज हो रहे हैं एसिड और अल्कलाई इनटू देयर रिस्पेक्टिव आयंस, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोक्साइड. अब बात हम कर रहे थे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की, ठीक है. तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है व्हेन एसिड्स रिएक्ट्स विद बेसिस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर. अब सॉल्ट कुछ भी हो सकती है, ठीक है. सॉल्ट जो है वो मैंने शायद आपको बताया था प्रीवियस क्लास में या कुछ लास्ट क्लासेस में कि सॉल्ट्स कैन बी ऑफ मैनी कैटेगरीज लाइक सोडियम क्लोराइड. सो दिस क्लोराइड एट द एंड इज रिप्रेजेंटिंग सॉल्ट. यानी यहाँ पे अगर मुझे सोडियम क्लोराइड बनाना है, फॉर एग्जांपल आई हैव टू make an equation in which I have to show the formation of sodium chloride, and obviously water is a constant byproduct जो कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में लाजमी बनता है, ठीक है. न्यूट्रलाइजेशन की डेफिनेशन यही है कि एसिड्स आर गोइंग टू रिएक्ट विद बेसिस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर. दिस इज द एक्यूरेट थिंग, ये चेंज नहीं हो सकती. डिपेंड्स कि सॉल्ट कौन सी बन रही है, क्या क्लोराइड सॉल्ट बन रही है या शायद सल्फेट सॉल्ट बन रही होगी या शायद कार्बोनेट सॉल्ट बन रही है.
These are the categories of salt. और आपको याद होगा ATE, लास्ट में ATE आना चाहिए 8, that is indicating that this compound is a salt. It could be sulfate, it could be carbonate, it could be nitrate, it could be phosphate, PO4. ये सारे आपके पास थ्योरी के अंदर मौजूद भी हैं जो आपको टेबल मैंने दिए थे. तो डिपेंड्स कि हम सल्फेट सॉल्ट की बात कर रहे हैं, हम हेलाइड यानी क्लोराइड सॉल्ट की या ब्रोमाइड सॉल्ट की बात कर रहे हैं, हम कार्बोनेट, नाइट्रेट, फॉस्फेट किसी की भी बात कर रहे हैं. So obviously we have to pick the reactants in order to make these salts. So what could be the reactants if I am talking about sodium chloride? Let's start with the easier one. If I have to make an equation to show the formation of sodium chloride salt, what reactants should I pick? Should I choose? Can you guess it? Sodium and chlorine. No. How is it possible? See, so अभी हमने एसिड का बोला ना कि एसिड हमारे पास कितने, 3 हमने पढ़े. अभी अभी मैंने आपको बताया कि 3 स्ट्रॉन्ग एसिड्स वी हैव. हम अभी इसी को लेके चल रहे हैं, हम वीक एसिड पे आए नहीं हैं. दीज आर द एसिड्स: हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड. ठीक है, सिर्फ इसको अभी जहन में रखो आप. Okay. ठीक है, हम इन 3 में से पिक कर रहे हैं अभी, हम और किसी एसिड पे नहीं जा रहे. बाकी बात जो है वो बाद में पढ़ेंगे. मुझे बताओ कि among these three, which acid we should use in order to form NaCl? Hydrochloric acid. Exactly, hydrochloric acid. And what base we should use? Or alkali, you can say. It would be Na. It should be containing hydrogen, Na, and oxygen, right? So it It will can be either contain hydroxyl or oxygen. Both of them is going to make NaCl, either NaOH or Na2O. Let's say we are yeah. talking about NaOH. ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बोला बेस. जब मैंने बेस बोला है तो यू कैन गो फॉर NaOH एज वेल, या फिर सोडियम ऑक्साइड भी हो सकता है. सोडियम ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होगा? Na2O. वाई? बिकॉज ऑक्सीजन इज -2. ठीक है. एंड But you might need an extra hydrogen for that to सॉरी complete व्हाट? the. You're going to need an extra hydrogen as well because on the other side, on the product side, you have 2 hydrogen, but on the reactant side, you have 1 hydrogen. So you have to equal it out. So that is why we are in need of balancing the equation, right? That is why we do the balancing equation. ऐसा थोड़ी है कि यहाँ पे अगर हाइड्रोजन एक है और यहाँ पे 2 है तो मुझे यहाँ पे लाजमी इस तरह 2 चाहिए. नो, दैट्स रॉन्ग. मुझे इक्वेशन बैलेंस करनी होगी और मुझे यहाँ कोई नंबर लगाना होगा उसको बैलेंस करने के लिए. यहाँ कोई नंबर और यहाँ कोई नंबर. नहीं whenever we नहीं, are going आप to. नहीं लगाओगे, बट आप बेसिस ऐसे चूज कर सकते हो. जैसे आप कह रही हैं कि आप Na2O भी यूज कर सकते हैं, बट उसके अंदर हाइड्रोजन नहीं होता. इट्स फाइन, दैट्स नॉट एन इशू. हम बात कर रही हैं एसिड बेस की. तो बेस कैन बी बोथ ना. बेस कैन बी NaOH एज वेल एंड Na2 एज वेल, Na2O. हाइड्रो ऑक्साइड लूं मैं या ऑक्साइड लूं, एट द एंड सॉल्ट भी बनेगा, वाटर भी बनेगी. न्यूट्रलाइजेशन दोनों ही कहलाएगा, चाहे मैं ये परफॉर्म करूं या ये अगर परफॉर्म आप करूं. HCl के साथ Na2O यूज करते हैं तो आपके उस साइड के ऊपर आपका एक हाइड्रोजन हो जाएगा. मैं आपको बताती हूँ, एक सेकेंड. पहले हम ये इक्वेशन देख लेते हैं. ये तो समझ आ गई आपको, Hcl प्लस NaOH. तो ऑब्वियसली Na पार्ट जो प्लस है वो इसके नेगेटिव से अट्रैक्ट करेगा, और ये OH नेगेटिव है, ये इसके पॉजिटिव से अट्रैक्ट करेगा. आपको पता है कंपाउंड में फर्स्ट वन इज द पॉजिटिव वन, इलेक्ट्रो पॉजिटिव है, और ये इलेक्ट्रो नेगेटिव है. तो दिस इलेक्ट्रो पॉजिटिव इज गोइंग टू अट्रैक्ट दिस इलेक्ट्रो नेगेटिव एंड मेकिंग अ वाटर, फॉर्मूला ऑफ वाटर. ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल H2O. एंड देन दिस Na इज गोइंग टू अट्रैक्ट दिस क्लोराइड आइन, एंड ऑब्वियसली NaCl सॉल्ट बन गई. ठीक है. नाउ वी आर रिप्लेसिंग दिस NaOH with Na2O. राइट? अब क्या होगा? It is going to be Na2Cl. Correct the formula. What is the valency of Na and Cl? Na is, Na2. no, it is in group 1. Right. It is in group 1, that is indicating valence electron, right? Yeah, Yeah, so the valency of Na is 1. 1. What about chloride? It has 7.
Yes. So there it is going to be -7 and then yes. +7. No. 7 means it is going to accept one electron to complete its octet, right? Yeah, So valency would be, positive 7. if it is gaining electron, negative sign would be appear or positive. If it is gaining, there Yeah, will be negative, obviously. and So how many electrons is it gaining? it is gaining 1. It is Yeah. going to So be -1, yes, it and is then going it's to be going to -1. cancel So formula would be, out. right? NaCl, NaCl, yes. and then they are going to cancel out. This Na has been utilized by Cl, right? Bond has been Yeah, formed between these two. NaCl, sodium chloride, salt has been formed. What would be the byproduct? What do you think? like there are NaOH, No, Na has already been bonded with chloride. but there are two Na. That is why we are going to do the balancing. That's what I have been explaining you कि यहाँ पे अगर आप ये देखोगे ना 2 मार्क 2 नंबर, तो यही बैलेंस करने के लिए तो मैं इक्वेशन बैलेंसिंग कर रही हूँ। मैं ये थोड़ी देखूंगी कि भाई एक Na बॉन्ड बना चुका है क्लोराइड के साथ, तो एक और Na बच गया। नो, अभी मैं बैलेंसिंग करूंगी, वो बैलेंस हो जाएगा, अभी आप देखना। ठीक है। अच्छा, फिर HCl बचेगा। यस, यानी आपके पास Na जा चुका है, Cl जा चुका है, बॉन्ड बना चुके हैं, H बच गया और O बच गया। अब HO इज नथिंग। मैं ये थोड़ी लिखूंगी कि जो बच गया है वो मैं लिख दूं, ऐसा थोड़ी है। ये तो आप जो इक्वेशन लिख रहे हो, ये इक्वेशन जो आप लिख रहे हो, दैट हैज एक्चुअली बीन परफॉर्म्ड ऑलरेडी, प्रैक्टिकली ये ऑलरेडी हो चुका है। तो लाजमी बात है इसके अंदर 2 प्रोडक्ट बने होंगे, एक बाय प्रोडक्ट बना होगा, एक प्रोडक्ट बना होगा। तो सॉल्ट यहाँ पे भी बनेगी और वाटर यहाँ पे भी बनेगा लाजमी। इक्वेशन हम ऐसे नहीं बनाते कभी भी कि भाई जो बच रहा है उसको आप ज्वाइन कर दो, कंबाइन कर दो और बना दो, नहीं, दैट्स नॉट द वे। इस तरह तो फिर हम अगर फॉर्मूला मेकिंग जो हमने की थी उसमें क्या किया था हमने, एच और ओ अगर हम ले रहे हैं, तो वी नो द वैलेंसी ऑफ ऑक्सीजन विच इज -2, राइट? एंड वी नो हाइड्रोजन इज +1। व्हाट इज द फॉर्मूला? H2O। हाउ कैन इट बी HO? ऑल्दो यहाँ पे H बच रहा है और यहाँ ऑक्सीजन बच रहा है, बट हम ये नहीं कह सकते कि H और O को आप मिला के लिख दो और HO हो जाए। HO is nothing. So obviously we have to write the correct formula. That is why we have been practicing making formulation making. ठीक है, फॉर्मूला मेकिंग। तो अब क्या करना है, अब देखना ये है कि बैलेंसिंग कैसे होगी। ये 2 इक्वेशन समझ आई है न्यूट्रलाइजेशन की? Yeah. ठीक है, अच्छा, लेट्स स्टार्ट अगेन। Let's do it again. HCl. Okay, let's replace HCl with any other strong acid. Give me a name. H2SO4. H2SO4 it is. Then any base like hydro, either it could be hydroxide or oxide. We are gonna do the both. Hydroxide. Like NaOH. which one? NaOH. NaOH हो चुका, कोई और? कोई भी metal, just pick any metal and make a bond with either hydroxide or oxide. Hmm. Any metal. Pick any metal from group 3A. Uh, Potassium hydroxide. Okay. What could be the K- formula? KOH. Okay. First product क्या बनेगा भाई? इक्वेशन बनाने के लिए पहले तो क्लियर ये कर लो, KSO4. KSO4। I think so. करेक्ट द फॉर्मूला। पहले फॉर्मूला आप अपने साथ साथ ये इक्वेशन लिखो, ठीक है? और मुझे बताओ कि फॉर्मूला क्या बनेगा। के और SO4 तो बॉन्ड बनाएंगे लाजमी। क्यों बनाएंगे? बिकॉज दिस इज हैविंग नेगेटिव चार्ज एंड दिस इज हैविंग पॉजिटिव चार्ज। लाजमी बात है, बॉन्ड इन दोनों का ही बनेगा। बट करेक्ट फॉर्मूला लिखना इज नेसेसरी। और फॉर्मूला मेकिंग हमने की इसलिए थी ताकि हम इस वक्त इसको यूटिलाइज करें। जरा कोशिश करो, आप मुझे बताओ। हम्म। ओके, व्हाट इज द वैलेंसी ऑफ पोटेशियम? Wait, wait, let me just एक try.
Take your time. Take your time. Hmm. Did you make the formula? Shall I move forward? K2SO4 K, H2O. K2SO4. Why? Because sulfate is -2, potassium is +1. ठीक है, One and they are फॉर्मूला, going हाँ फॉर्मूला सही बनाया है आपने, लेकिन थोड़ा कोशिश करो कि इसकी प्रैक्टिस करो, so that it would take less time to make these formulas, right? K2SO4. What next? water plus Water. H2O. Yes. Let's balance this equation. Let's check if it is balanced or not. Okay, what about, अच्छा, for balancing, important thing is you have to balance the element, right? सबसे पहले आप element ही देखते हो बैलेंस करने के लिए, और इसके अलावा अगर बैलेंसिंग के लिए जो भी नंबर लगता है वो हमेशा इस पोजीशन पे लगता है, लाइक मोल्स जिसको कहते हैं हम, जब भी हम पढ़ेंगे, ठीक है, कभी भी आप एलिमेंट के साथ सब्सक्रिप्ट के ऊपर नहीं लगाते, यार यहाँ पे कोई नंबर नहीं लगेगा, ऑब्वियसली यहाँ नहीं लगेगा, नंबर सारे हमेशा इस तरफ लगेंगे. सो लेट्स टॉक अबाउट हाइड्रोजन. वी हैव टू हाइड्रोजन हियर, ठीक है, और यहाँ पे कितना है, एक, टोटल कितने हो गए, 3. यहाँ कितना है हाइड्रोजन, 2. दैट मीन्स यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है. तो जिस तरफ ऑब्वियसली कम हाइड्रोजन है, मुझे कोई ना कोई नंबर वहां पे लगाना है, ठीक है. You can add 3 with it, so 6 on a side number. The two. आई कैन ऐड, सॉरी रिपीट अगेन. You can add 3 over here and 2 over there, so that both of them 2 over have here, 2 is a 4, राइट. यहाँ पे क्या लगाऊंगा, इसको over 4 here, करना है. but 2 over there, so that they are 6 on both sides. Like 2 3s are 6, and then 3 2s are 6. Okay, on the reactant side we have 3, right? So you're asking me to put 3 over here. I'm asking you to put 2 over here. KOH. Okay, let's put 2 over here. कितने हो गए अब? 6. No, it's not. Count it again. Wait, 5? It's 2, No. right? 2 means Yeah. पोटेशियम भी 2 है, ऑक्सीजन भी 2 है, और हाइड्रोजन भी 2 है, राइट? Yeah. और यहाँ पे भी हाइड्रोजन 2 है. ऑल टुगेदर कितने हुए? 4. 4. यहाँ देख लो आप, इस सिचुएशन में आप मल्टीप्लाई करते हो, ठीक है. व्हेन यू हैव एनी नंबर इन द सबस्क्रिप्ट, एलिमेंट की सबस्क्रिप्ट के ऊपर कोई नंबर मौजूद है और यहाँ एक नंबर है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे आप मल्टीप्लाई करोगे, इट इज अगेन 4, राइट? सो द Yeah. हाइड्रोजन इज बैलेंस्ड, Yeah. ठीक है. तो लेट्स टॉक अबाउट सल्फेट. अच्छा, सल्फेट में हम पूरा का पूरा आयन कंसिडर कर सकते हैं. इट वुड बी इजियर टू बैलेंस दिस वे. अगर आप सल्फर अलग कर दोगे और ऑक्सीजन अलग कर दोगे तो फिर ज्यादा ट्रिकी हो सकता है, तो हम सल्फेट काउंट कर लेते हैं. एक सल्फेट का यहाँ पे मॉलिक्यूल मौजूद है, यहाँ पे भी एक ही मौजूद है, ऑब्वियसली इट इज बैलेंस्ड. पोटेशियम, हाउ मेनी पोटेशियम आर देयर on the reactant side? 2 on each Yes, side. 2 on each side, so the equation is balanced. Yes. See, okay, let's make another equation with the same compounds, H2SO4, but this time we are using base as oxide and not hydroxide. H2SO4, क्या होगा पोटेशियम ऑक्साइड का फॉर्मूला? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड तो कर लिया हमने. लेट्स टॉक अबाउट अनदर बेस.
potassium Right, oxide. K, 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 O, you sure? KO2, KO2, check it again. Check the valencies. K2O. K2O, yes, very good. K2O, so the salt would be same, K2SO4. ठीक है, जैसे पहले बनी थी obviously अभी भी वही होगा. And then we have obviously water molecule H2O. Let's balance it. Can you balance it? Or is it balanced already? Wait, no, it is not. Oxygen on on the reactant side there are five, and then no, yeah. It is. It Is it is. balanced? Yeah, it is. So the whole equation is balanced. Let's check it one by one. Na? Hydrogen देखते हैं. Hydrogen is 2, balanced, right? Sulfur 1, obviously 1 is balanced. Oxygen 4 and 5, 4 and 5 is balanced. Potassium 2, potassium 2. So what's the difference between the previous equation with potassium hydroxide and this one? Like the previous one and this one. The previous one was like, okay, I'm gonna write it again. H2SO4, and then we have 2KOH ऐसा ही था, ठीक है. Then we have I K2SO4. think it had two water molecules. Yeah, it had two water molecules. So the difference in क्या कहलाएगा ये, क्या क्या difference है ये? Obviously the equation is exactly the same. So what is the difference? Like there's one hydrogen more. One hydrogen molecule, and in the second equation we have two hydrogen molecule, right? Yeah. And then the reactant side, The left hand side, like the same hydrogen is like extra. you mean we have potassium oxide, one molecule of potassium oxide, but in case of potassium hydroxide, we have to use two molecules in order to carry out the reaction with sulfuric acid, right? Yeah. So that is the difference I was talking about. Neutralization reaction means acids react with bases. It could be either oxides, it could be either hydroxides. The only difference would be the moles or molecules of those compounds which are involved in the whole reaction. So in this reaction, we are having 1 mole each, one molecule of H2SO4, one molecule of K2O, potassium oxide, and obviously the formation of but salt and water, it would be same as this one. दोनों ही केस में salt और water बन रहा है. The only difference is the quantity. Quantity is different. The molecule number of molecules are different. The number of actually these are called number of moles. आगे आपका टॉपिक आएगा, ठीक है. These are called number of moles. So in the second equation, we have to use 2 moles of hydroxide, but when we talk about the first equation, obviously we don't need to have 2 moles, and 1 mole is enough to react with 1 mole of sulfuric acid to give 1 mole of salt and 1 mole of water. So you can see the difference. There is the difference in quantities only. There is no difference in the product. The products are same. Is it possible that if we use, okay, have you done crystallization? Have you ever heard crystallization before? The term crystallization? Yeah, I have heard of it. कुछ डेफिनेशन या कुछ भी थोड़ा बहुत जहन में है? No. Okay. See, crystallization is only the technique or method to form crystals of what? Of salt. Okay. So these water molecules are basically going to be evaporated in the whole process, and the only thing would be left is salt. So that's how you are going to prepare salt in laboratory. Okay. But that's not the only method. There are various methods to prepare a salt. One of them is neutralization reaction, right? Yeah. Okay, let me give you another example of reaction. Obviously, we have to do the chemical equation balancing. तो मैं आपको जो है वो dictate कर रही हूँ कुछ compound. You have to make the formula first. Reactants बताऊंगी मैं आपको कि this molecule is reacting with this molecule. What could be the product and how are you going to balance it? और formula भी आपको खुद लिखना है. Shall I start? Yeah. Okay. First one is aluminium Al, aluminium group 3A reacts with uh, potassium chloride. Aluminium reacts with potassium chloride. What could be the possible product or maybe byproduct?
Okay, there is a hint. Do remember about the reactivity series of metals and the trend we have already done before, how the reactivity is decreasing or increasing across the group or across the period. So it's aluminium reacts with potassium chloride. That's right. That's how we are gonna make the formula of potassium chloride, right? Yeah. Okay, tell me in which group potassium is present? In first group What is going about to have aluminium? third group. That means obviously potassium पहले आ रहा है. So across the period, what do you think the reactivity is increasing or decreasing and why? I think from left to right, like it increases across the page. Do you have the periodic table right in front of you? Yeah, I have it. Okay, just check the sizes of these molecules. The atomic radii जो कि हमने पढ़ा था across the period, was it what is it happening exactly It in is atomic radii? increasing. Increasing or decreasing? Like from like top to bottom, Hmm. atomic radii, I think I read increases. Exactly. And what about across the period? It is opposites, so it decreases. Exactly. It decreases. So what would be the effect on the reactivity if the atomic radii is decreasing across the period? Like reactivity increases. Take your time and just repeat, recall the whole method or the whole criteria which we have discussed. How the atomic radii is going to affect the reactivity. What was the concept behind that? Just recall it. I'm giving you time. So when atomic radii increases, Hmm. the nuclear pull, like all Hmm. Hmm. when the shells are less, the Yes. nuclear pull is also it is bigger. मतलब ज़्यादा Yeah. होती है Yeah. So, तो आपकी वो decrease होती है cause की. okay, let me recall it for you. When we talk about top to bottom or across the group, right? The atomic radii is increasing, the size is increasing. That means number of shells are increasing. If number of shells are increasing, there would be greater space between nucleus and the valence electron, right? So the Yeah, nuclear pull would be decreased. So would it be easier to remove that last electron in order to involve them into a whole chemical yeah, reaction? it will be Yeah. So easier. the reactivity would be, if it is easier to remove that electron and involve them into a whole reaction and to carry out the whole reaction, reactivity would be increased or decreased? I think it will be increased. Increase? Yeah, Okay, then what about across the period? Just make the opposite sense. The whole criteria or whole concept just the opposite कर reactivity दो उसका. increases Decreases. How? because like the nuclear pull is not there and like they're easier. Nuclear pull is there, right? The nuclear pull Like is there. it is there, but like the shells are increasing, so like there its energy decreases. It's about group, right? I'm asking you about period. What about period? So like down the period, No, no, it no. Not down. It's like left to right now. I was doing that. Okay, it's fine. Just take your time. ठीक है? Just look at the periodic table. We are talking about left to right. Atomic radii is decreasing or increasing? सिर्फ इतना सा बताओ मुझे. From left to right, Yes, atomic radii is decreasing. exactly.
So the shell size, obviously shells would not be there and the sizes would be lesser, smaller. So the nuclear pull would be increasing. exactly. So would that be easier to remove the last electron? No. Reactivity would be ज़्यादा. ज़्यादा कैसे? If it is not easier, if it is difficult to remove the last electron or valence electron and to involve them into a whole reaction, how is the reactivity is increasing? How is the reactivity increases? Is it going to increase or decrease? Decreased. Decrease. Okay, so let's talk about aluminum and potassium. Which one has the higher reactivity? Wait, yeah, so aluminum has. You gotta practice this a lot. I know it takes time, but you have to practice this. Just like do the electronic configuration throughout the whole period or group and just find out how the trend is following. ठीक है, we have to practice this, वरना फिर बहुत मसला होगा क्योंकि आगे काफी सारे टॉपिक्स पे डिपेंड करते हैं. मुझे जल्दी से बताओ एल्यूमिनियम पोटेशियम, which one is more reactive? I think aluminum is more reactive I than don't know. potassium. Just take your time. I'm giving you 2 minutes for that. Aluminum is more reactive than potassium. I'm again asking you, aluminium or potassium? Like the more reactive is, Yeah. I think, potassium because it is like in the beginning, so like it. And when we go from अभी हमने पढ़ा, when we go from left to right, the reactivity decreases. That means which one has the more reactivity? Aluminum. Wait, no, potassium. You just said the right answer. Yeah, which one? Aluminum. No, potassium. Potassium. Okay, let's do it again. Um, what about, just leave this one. What about magnesium and calcium? Which one is more reactive? Follow the whole trend and follow the whole concept behind this. Take your time. There is no hurry. ठीक है, आराम से सोचो, मुझे बताओ सोच के. I think calcium is like more reactive. Okay, group 2 है, ऐसा ही है. Yeah, First element is calcium or magnesium? like पहले magnesium आते हैं उसके बाद calcium आता है. ठीक है. So which one is reactive? Calcium is like Very more. good. Can you tell me the reason? It has like more electrons in its valence shell. So मतलब फिर आपका nuclear pull भी मतलब कम होता रहता है इसका Yes, इसका. yes, It is yes. easier to attract. Perfect, perfect. Now let's talk about this one. Aluminium and potassium. अब देखो आप, अभी आपने across the group देखा था, अब देखो आप across the period. Potassium. Yes, potassium is more reactive. Why? Like it has like 19 electrons in its valence shell and aluminum has 13. So like That nuclear could be pull the is. reason too. That could be the reason too. But यहाँ पे हम बात कर रहे हैं atomic radii की. Atomic radii या size जो है वो decrease हो रहा है. So again we have the same reason. The nuclear pull is stronger. Obviously हम जब बात करते हैं केमिकल रिएक्शन की, तो केमिकल रिएक्शन में बॉन्डिंग, क्या सारे इलेक्ट्रॉन बना रहे होते हैं? बॉन्ड फॉर्मेशन और बॉन्ड मेकिंग में या बॉन्ड ब्रेकिंग में, दोनों केस में क्या सारे इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व होते हैं बॉन्ड फॉर्मेशन में? यानी मैं बात कर रही हूँ अगर आपकी Na और Cl की ना, तो क्या Na और Cl के सारे इलेक्ट्रॉन, यानी Na में मौजूद है कितने, 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं Na में, ठीक है, सोडियम के अंदर. क्लोराइड के अंदर हैं 17 इलेक्ट्रॉन्स. So all of these electrons are involved in the formation of bond.